Morning, students. Welcome to your computer class. Now, the chapter number 10 is over. That's string manipulation. पढ़ लिया, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली. मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए, एक्सरसाइज भी भेज दी. Over. Now the next chapter is the list manipulation. Now, what is the list? List is a sequence in your Python. String, list, tuple, dictionary. There are 4 sequences. Okay. What is the difference between these sequences? In these 4, string and tuple are immutable. Immutable means you can't change the value in place, right? And string and list and dictionary are the sequence which is mutable. Then what is the difference between list and dictionary? In the list, the item, the sequence item is placed based on the index, and in dictionary it is based on the key value pair, right? So list. What is the list? List is a sequence which is stored on the base of index, and the most important thing in the list is this sequence is mutable, means you can change the value in place. अब इसमें जो जिस प्लेस पर वैल्यू है उस प्लेस पर वहीं पर चेंज कर सकते हैं. दैट इज द mutability, means you can change the value in place. That is the mutability, and list is mutable. Now, how can you create a list? लिस्ट आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट, डिक्लेयर अ लिस्ट इन प्लेस. लिस्ट का नाम मान लीजिए मैंने L1 लिखा. L1 इक्वल टू डिक्लेयर अ लिस्ट. A E I O U. One more thing. String is the sequence of character, but the list is the sequence which item can be anything. Anything means these item may be a character, may be string, may be integer, floating point number, a sublist, anything. So this is the difference between the string and the list. One difference is the string is immutable and list is mutable. One major difference is this. उसके अलावा string is the sequence of characters only, and the list is the sequence, maybe the sequence of number, maybe the sequence of floating point number, maybe the sequence of strings, sublist, anyone, right? अब एक तरीका लिस्ट क्रिएट करने का, डिक्लेयर द लिस्ट. सीधा सीधा अपने अपने प्रोग्राम में इस तरीके से लिस्ट डिक्लेयर कर दी. दिस लिस्ट हैज द 5 आइटम्स. दिस इज ऑन द 0th इंडेक्स. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? दिस इज द वन वे टू डिक्लेयर अ लिस्ट. दूसरा तरीका, अब ये लिस्ट कीवर्ड यूज करके गिव अ सीक्वेंस, and this list keyword convert this sequence to a list. For example, sequence, हमारे पास सीक्वेंस में स्ट्रिंग आता है, टुपले आता है. तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दिया. मान लीजिए मैंने दिया लिस्ट हेलो इक्वल टू L. अब इस L में जाएगा क्या? यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अ स्ट्रिंग. इसको मैंने इस कीवर्ड में पास किया. दिस लिस्ट कन्वर्ट दिस सीक्वेंस टू अ लिस्ट. तो इस एल में क्या गया? इस एल में जाएगा H फर्स्ट कैरेक्टर, E L L O.
this sequence is now converted to the list. So the another way to create a list, first you can declare a list like this. The another way to create a list, pass a sequence to list keyword, and this list keyword convert this sequence to a list. Right? Now the third way, you can do also like this. L is equal to list. This will create a empty list. आप L को प्रिंट करोगे, L की जगह पे आपको एक empty list मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई सीक्वेंस नहीं दिया है. अगर आप यहाँ पे कोई सीक्वेंस देंगे तो ये आपका लिस्ट कीवर्ड इस सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन अगर आपने इस जगह पर कोई भी सीक्वेंस नहीं दिया तो भी ये लिस्ट कीवर्ड लिस्ट तो क्रिएट करेगा, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस नहीं दिया था तो इट क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट. इसके बाद आप लिस्ट को कीबोर्ड से रीड भी कर सकते हैं. अब देखें क्या होता है. मान लीजिए मैंने दिया L इज इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर अ लिस्ट. अब ये मैसेज प्रिंट हुआ. आपने कोई भी एक वैल्यू इनपुट की. अब ये आपको पता है कि जो इनपुट कीवर्ड है वो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग, यानी जो भी वैल्यू आपने दी उसने एज अ स्ट्रिंग ली. ठीक है. और उस लिस्ट कीवर्ड ने, मैंने आपको बताया था, अगर आप लिस्ट में स्ट्रिंग पास करें तो हर कैरेक्टर को अलग अलग कर देगा. यानी अगर आपकी ये लाइन चली एंटर अ लिस्ट, आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ. आपने मान लीजिए दे दिया 0 1 2 3 4 5. क्या होगा? दिस इनपुट फंक्शन टेक दिस एज अ स्ट्रिंग, और ये लिस्ट इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अलग अलग कर देगा. यानी ये एल में क्या जाएगा? एल में आपका आएगा 0 1 2 3 4 5 and 6. Right? Now, then how you can read a list as a list? Means you don't want to be, well, you want this is a one item as a list, not the character one. आप लिस्ट को लिस्ट की तरीके से ही रीड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? You can do like this. L is equal to use eval input enter a list. Now what will happen? आपका ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर अ लिस्ट. अब आप लिस्ट को लिस्ट की तरीके से दीजिए. जैसे आपने लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद या 10, 20, 30, 40 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर. क्या होगा? ये इवैल फंक्शन इसको आइटम वाइज ही इवैल्यूएट करेगा. देन लिस्ट ऑल्सो नो सफिशिएंट. दिस इवैल फंक्शन टेक इट एज अ लिस्ट. अब आप L को प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज लिस्ट की आपके लिए इसी लिस्ट को प्रिंट करेगा. दिस इज द अनदर वे टू रीड अ लिस्ट यूजिंग द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड यूज करके लिस्ट को ऐसे रीड कर सकते हैं यूजिंग द eval कीवर्ड. नाउ what operation you can perform using on the list? That is the similarity between the, now come to the similarity with the string. अब ये लिस्ट हो गई. लिस्ट आपको डिक्लेयर करना आ गया. You can declare directly or you can read using the keyboard.
Now what are the similarity between the list and the string? What is the string? Sequence of character. List, also a sequence, right? Difference between list and string: one is immutable, another one is mutable, and one is sequence of character, another one is the sequence of item. Now, first, what is the similarity? Similarity, both are the sequence and both store the sequence at the index 1. दोनों ही सीक्वेंस हैं और दोनों ही सीक्वेंस को इंडेक्स वाइज स्टोर करते हैं. इंडेक्स वाइज मीन्स द 0 to length -1 and the reverse index -1 -1 to minus length. जैसे आपका स्ट्रिंग स्टोर होता है वैसे ही आपकी लिस्ट भी स्टोर होती है इंडेक्स के बेस पर. जैसे आपका मान लीजिए दिस इज द लिस्ट. L is equal to 10, 20, 30, 40. Now 10 is stored on the 0th index. This is on the first, second, third, -1, -2, -3 and -4. Same as string. List is also stored based on the index. And same as string, you can access any item giving the index. आप लिस्ट के साथ इंडेक्स का नाम दीजिए, उस इंडेक्स पर जो भी आइटम होगा उसको आप एक्सेस कर लोगे. आप ऐसे नहीं, आपने दिया L1, it return 20. आपने दिया L-1, it return 40. Same as string. Apart from this one, what are the other similarity? First, length. What is the length? Length of the list. String की लेंथ आप कैसे एक्सेस करते हो? लेंथ फंक्शन से. लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सेम लेंथ फंक्शन in the list also return the length of the list. Means the number of item in the list. Thus like this. L is equal to 10, 20, 30, 40. There is a list. If you are telling len L, it returned the length of the list means 4. Same as string, right? Second, indexing and slicing. इंडेक्सिंग तो मैंने बता दिया. इंडेक्सिंग मतलब स्ट्रिंग आपका जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को इंडेक्स के बेस पे स्टोर करता है. मीन्स फ्रॉम द 0 टू द लेंथ -1 एंड रिवर्स -1 टू माइनस लेंथ. ठीक है. लिस्ट भी आपका आइटम को इंडेक्स वाइज ही स्टोर करता है. मीन्स 0 टू माइनस लेंथ, 0 टू लेंथ -1 एंड -1 टू माइनस लेंथ. Take. What is the slicing? Slicing means in the string, if you are giving a string slice, means start, stop. You can give the step also. It return a substring. And this happen in the list also. Means list की भी सब list आप निकाल सकते हैं. जैसे this is the list 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 and -4. If you are giving L 1:2 या 1:3, मतलब this is the start, this is the stop. 1 से शुरू करके 3 के एक पहले तक means 2 तक, यानी 1 और 2. It return a list which has the 2 item 1
index number 1 and index number 2 means it return 1 and 2 means 20, 30. String return the sublist and list return string return the substring and list return the sublist. Means sublist of the list this one. अगर आपने ये किया, मान लीजिए आपने किया L1 equal to this one. If you are printing L1, you will find out this one. मतलब इस लिस्ट की एक सब लिस्ट निकालकर इसने L1 में डाली. अब आप L1 को प्रिंट करेंगे तो ये आपकी सब लिस्ट प्रिंट हो जाएगी. Now the next one is the membership operation. मेंबरशिप ऑपरेशन आपके दो हैं, इन और नॉट इन. मैं सिमिलैरिटी बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग ले रही हूं. ठीक है. मेंबरशिप ऑपरेशन में इन ऑपरेशन टेक अ सब स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग. इट रिटर्न ट्रू इफ द सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट in the string and return false if sub string is not present in the string. Right? Same thing, similar thing is with the list. In this membership operation, it take a item which is present in the list or not present or not present. Means particular item present, just like this is the list. If telling 30 or 30 in L means it is checking is this item is present in the list. If this item is present, it return true. If this item is not present, it return false. एक आइटम लेगा, लिस्ट का नाम लेगा ये इन ऑपरेटर और रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये आइटम इस लिस्ट में प्रेजेंट है और रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ये आइटम इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है. राइट. नाउ फोर्थ वन इज द कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन. कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आपका प्लस है और रेप्लिकेशन आपका मल्टीप्लाई. ठीक है. व्हाट इट डू इन द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग में इट टेक टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग. मल्टीप्लाई ऑपरेटर टेक अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर. It replicate the string that number of time and return a replicated string. Same work is performed by both the operator in the list also. Plus operator take two list, concatenate the list and return the concatenated list. Just like this, this is the L and this is the L1. A, E. Right? If you are telling L2 is equal to L plus L1, it return 10, 20, 30, 40 AE. Means a list which has the 6 item. And first this 4 and this 2. Total 6 item in this L2. That is the concatenation. Plus operator take two list. Concatenate the list and return the concatenated list. Right? Multiply or can say a replication operation take a list and a number and replicate the list that number of times. Means if you are writing L3 is equal to L1 multiplied by 2. What is L1? AE multiplied by 2 means it replicate the string 2 times and passes to the L3. अब आप L3 को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा A E A E. Means a list which is replication of the list 2 times.
right? Okay, I think it's a sufficient one. Okay. Similarity मैंने बता दी. Difference one major difference between list and string is list is mutable, string is immutable. The major difference. Apart from that, string is the sequence of character and list is the sequence of item. That item may be a number, a string, a sublist, anything.